male reproductive system. You have primary sex organ and primary reproductive organs, which includes testis. सबसे पहला testis are also called as gonads in males. Testes have two important functions. One is gametogenic, that is it produces the gametes, male gametes, that is spermatozoa, and second most important function is it produces sex hormones in males, that is testosterone. Apart from testosterone, you have dihydrotestosterone and androstenedione. These are the three sex hormones or androgens in males. Then, where are these testes located? Where are these testes formed? Initially, they are formed in abdominal cavity. But near the delivery, it descends down into the scrotum by a canal called as inguinal canal. Okay? समझ में आ रहा है? It descends into the scrotum through inguinal canal. And the descent, जो उतरना है ना testis का नीचे, that is under the influence of hormone testosterone again. The testosterone acts on gubernaculum and gubernaculum pulls the testis down. Okay? Anyways, it is suspended in the scrotal sac by spermatic cord connected to wall of the scrotum. It is connected to scrotum by means of gubernaculum, which is a tough fibrous band. Okay? Then accessory sex organs, it includes accessory ducts and accessory ducts. If you cut the testis, you will find multiple lobules, which are called as testicular lobules. These testicular lobules has seminiferous tubules in them. 2 to 3 seminiferous tubule in each lobule. These seminiferous tubules unite to form rete testis. Rete testis moves out and forms vasa efferentia. Vasa efferentia opens up into epididymis or epididymis, which has three parts: the capute, that is the head; the corpus, that is the body; and tail, that is the cauda. From the cauda epididymis arises a long tube which is called as vas deferens or vasa differentia or vasa deferens. This vasa deferens meets up with the duct of the seminal vesicle, and both of the duct, when joins, forms ejaculatory duct. This ejaculatory duct opens up into the urethra. समझ में आ गया? Ejaculatory duct, urethra. Now passage of sperm. अगर आप देखोगे passage of spermatozoa, the spermatozoa are formed in testis. That is a germinal epithelium of the seminiferous tubule. याद आ रहा है? Yes. Then from the seminiferous tubule they move to rete testis. From rete testis, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, then ejaculatory duct, and then urethra से बाहर. Yes or no? Yes. Now accessory glands. We have studied the accessory glands. We have three different accessory glands. The first is seminal vesicle, which is present on the either side of the urethra. ये दिख रहा है? Yes. These are your seminal vesicles. Seminal vesicles secrete seminal fluid, which constitutes around 60% of the total semen. It is rich in fructose, fibrinogen, and prostaglandins. Apart from that, you have seen कितने सारे चीजें होते हैं seminal fluid. Yes or no? It opens up through seminal duct into the ejaculatory duct, and then ejaculatory duct into the urethra. Prostate gland, can you see this yellow and pink wala part? This single part, this is one and only one prostate, but इसके lobules होते हैं, इसके lobes होते हैं. They are almost 12 to 15, but your book says 15 to 20. But ideally, average is 10 to 15 lobes होते हैं. कितना दिया है? 20 to 30. तो किसी बूढ़े का दिया है. Anyways, average is 10 to 15 lobes होते हैं. Median lobe, lateral lobe, medial lobe, ऐसे करके lobes होते हैं. लेकिन एक एज के बाद ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है. जब बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों में कैटरैक्ट आ जाता है, तो ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है. इसको बोलते हैं प्रोस्टेट की शिकायत और बीपीएच, benign hypertrophy of prostate. इसमें यूरिन के फिल्म. Anyways, prostate is present at the neck of the urinary bladder. Okay, it pours its secretion directly into the urethra. उसके 3 openings होते हैं. वो 3 openings के आपको नाम नहीं दिए. बस प्रोस्टेट अपना secretion directly urethra में डालता है,
and the secretions of the prostate is called as prostatic fluid, which constitutes around 30% of the total semen. Yes or no? Yes. Then come to the Cowper's gland or bulbourethral gland. Bulbourethral, present in the bulb of the penis, which opens up into the urethra. Two small glands on the either side. Can everyone see this bulbourethral gland? Yes. They do not constitute anything in the semen, but they constitute something in the pre-semen. Before semen is ejaculated, there is something watery fluid which oozes out. This is rich in the secretions of the Cowper gland, and the secretions of the Cowper's gland. क्या करता है secretions of the Cowper's gland? It lubricates the female genital tract. It lubricates the urethra. It clears the urethra because urethra is a common pathway for urine as well. So the urine may destroy the spermatozoa. To prevent this, you have your Cooper's gland secretion. This Cooper gland secretion clears of the urethra first. Second, it lubricates the female genital tract for easy copulation. What is semen? Semen is a viscous, alkaline, milky fluid. The pH is somewhere 7.2 to 7.7. It contains secretion of epididymis. Here, this statement indicates secretion of epididymis matlab spermatozoa, because spermatozoa matures. Because spermatozoa matures in epididymis. समझ में आ गया? Spermatozoa क्या मैच्योर होता है? Epididymis. इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया, it contains secretions of epididymis. Otherwise, epididymis secretes nothing. Okay. It provides. Everyone knows fructose जो आ गया, जो आपके seminal vesicles secrete कर रहे थे, fructose. Why fructose is present? Fructose is a carbohydrate. Carbohydrate is utilized by the spermatozoa for motility. अच्छा, अभी आप देखो कि spermatozoa move कैसे करता है. Then we saw calcium bicarbonate भी होता है, prostaglandins भी होता है, which helps for easy transportation of spermatozoa. It causes retrograde contraction of female vagina and cervix for easy transport of spermatozoa. Easy. याद आ रहा है या नहीं? Yes. यही पढ़े हमने, कुछ अलग नहीं पढ़े ना? External genitalia, you have male penis, which is male copulatory organ, which is made up of 3 muscle, 2 corpus cavernosum and 1 corpus spongiosum, and the area between the a triangular area between these 3 muscle accommodates your urethra and arteries and veins. तो कट सेक्शन यहाँ पे बनाया था मैंने. Scrotum. Again, scrotum is a loose pouch of skin which is present outside the abdominal cavity. Why the first and the foremost important reason why the testis is present in the spermatozoa is spermatogenesis, because spermatogenesis requires 2 degrees less than your normal body temperature to keep moving ahead. So, समझा? At high temperature, you will not have an healthy spermatogenesis. इसीलिए smoking has a risk of infertility. Alcohol has a risk because जब भी आप alcohol पीते हो, immediate heat production होता है. Immediate. जैसे आपने alcohol, इसीलिए आप जब कश्मीर वगैरह जाओगे, जब वहां पर टेम्परेचर सब नॉर्मल जाता है, सब 0 जाता है, -22, तो ऐसे में जिंदा रहने के लिए लोगों को बियर एंड वाइन दिया जाता है, बिकॉज बियर एंड वाइन डायरेक्टली एक्ट्स ऑन योर लिवर एंड इट प्रोड्यूसेस हीट. इट रिजल्ट्स इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड रिजल्ट्स इन हीट प्रोडक्शन. इसीलिए अल्कोहल एंड स्मोकिंग में रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी, डायरेक्ट इनफर्टिलिटी. मतलब ऐसा नहीं कि आज पिया तो 3 महीने के बाद, आज पिया आज ही इनफर्टाइल हो गए. मतलब आज के दिन यू कैन नॉट बिकम अ फादर, यू कैन ट्राई सम अदर. आज स्मोकिंग किया, यू कैन नॉट बिकम अ फादर, यू कैन ट्राई सम अदर. व्हाई? हीट प्रोडक्शन. यू नो हीट प्रोडक्शन में, इसीलिए समर में स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए. तो यू हैव योर डार्टोस मसल, यू हैव क्रेमास्टेरिक मसल, बिकॉज ऑफ इट द स्क्रोटम लूज keeps hanging down, is very loose, but in winter it is contact. समझ में आ गया?
Why I'm stressing on this thing? Because this is one of the favorite question which is asked in Viva and one liners. Viva में तो पूछते ही है. Now let's come to the section of testis. If you just cut a testis, you will find that the testis is covered by 3 layers. Yes or no? The outermost layer is tunica vaginalis. Everyone over here on the board, everyone. The outer layer is called as tunica vaginalis. The middle layer is called as tunica albuginea, and innermost layer is called as tunica vasculosa. Okay, and inner to that, you will find again 200 to 300 testicular lobules. Each lobule contains 2 to 4 seminiferous tubules. In between, just a second, these are your seminiferous tubules, and in between these seminiferous tubules, you will find a clusters of cells. These clusters of cells are nothing but your interstitial cells of Leydig. What is the function of interstitial cells of Leydig? They secrete testosterone. जो हमने testis का दो function देखा था, एक it secretes hormones. तो hormones कहाँ से आते हैं? तो वो Leydig cells से आते हैं. अब वो कैसे आते हैं? Come to this point as well. Now second function हमने क्या देखा था? The testis produces spermatozoa. तो spermatozoa कहाँ से आते हैं? Just look at your seminiferous tubule. Your seminiferous tubule has a basement membrane on which you will find 2 types of cells, 1 type and 2 type, the yellow type and the blue type. The yellow types are tall, slender, column-like. Yes or no? These are called as Sertoli cells or sustentacular cells or nurse cells. In between, you will find your germinal epithelium resting on the basement membrane. The germinal epithelium are nothing but the initial precursors of your spermatozoa. Sooner or later, these germinal epithelium will undergo spermatogenesis and form spermatozoa. So, you will find a germinal epithelium at different stages of spermatogenesis. Some might be primary spermatocytes, some might be secondary spermatocytes, some might be spermatozoa, or some might be a viable spermatozoa. Viable spermatozoa remains attached by the head to the Sertoli cells before it is released. Sertoli cells उनको पकड़ के रखते हैं जब तक कि वो रिलीज नहीं होते. उनको खाना देते हैं, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट सब देते हैं. इसीलिए Sertoli cells को nerve cells बोला जाता है. Yes or no? Yes. Okay. Anything else? That's it. Okay. Stages of spermatogenesis, we'll come to this. First, the last and the most important statement, after puberty, the cells, interstitial cells produces type of hydrogen, that is testosterone. Testosterone is responsible for secondary sexual characteristic. जो भी हमने पढ़ा कि प्यूबर्टी पे ये होता है, एडोलेसेंस में ये होता है, फेस पे बियर्ड आ रही है, हाइट बड़ी हो रही है, आवाज चेंजेस आ रही है, मुस्टैच आ रहे हैं, जो भी वाइटनिंग ऑफ द शोल्डर हो रहा है, everything is because of testosterone. Higher the testosterone, more the frequent changes. लेकिन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से साइड इफेक्ट्स भी आते हैं. बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जब तक है आपके हेयर बढ़ते रहेंगे. बॉयज के हेयर अलग होते हैं, पता है आप लोगों को. इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता बॉयज के हेयर, लेकिन उनके रफ होते हैं, सिल्की नहीं होते, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. You will not believe testosterone also guides the shape of your hair. Pubic hair अगर आप फीमेल दोनों में होता है, मेल्स में भी pubic hair होता है, फीमेल्स में भी pubic hair होता है. फीमेल्स का जो pubic hair होता है उसका अगर ट्रायंगल आप बनाओगे तो इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है. The base is upward. And males में the base is downward and apex is upward. This ये जो पैटर्न है हेयर का, that is also decided by testosterone. समझ में आ रहा है? मतलब टेस्टोस्टेरोन कोई मामूली हार्मोन नहीं. ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हुआ, you will end up into tumors. ठीक है? कम हो गया, you will end up into feminization. चेहरे पे देखा होगा बहुत सारे लोग का 50 साल के हो गए, चेहरे पे एक दाढ़ी का बाल नहीं आया. Yes or no? That may be genetic, but most probably. Now we will move on to gametogenesis. Male part ही पूरा पढ़ लेंगे and then we will start with the female part.
Last one, stand up. Gonads in females. Gonads in females. Gonads in females. Gonads in females. Gonads in males. Very good. Ovaries and gonads in testes and ovaries. Two poles there. Anyone else? Gonads क्यों बोला जाता है ovaries को? Yes. Yes, they are primary sex organs. They produce sex hormones. They produce the male gamete, female gamete. These are the three reasons. Anyways, बेटा ये जो स्टेटमेंट था ना मैंने चीक करके बोला और मैंने इसका इम्पोर्टेंस भी बताया. पढ़ाई नहीं करना है तो sit at home and enjoy. Question answer session to make. Don't sit. Keep standing. What is gametogenesis? Gametogenesis. And आपके आपने माइटोसिस एंड मियोसिस में पढ़ा होगा. एक गैमेट फॉर्मेशन में you have something called as meiosis. And just go back to your mitosis and just rewind it in your brain. Mitosis is equational division. The chromosome integrity, the chromosome number remains the same. Yes or no? There is no change in chromosome number, no change in chromosome size. Everything is same. And at the end, you will land up into two daughter cells, which are close to that of the father's parents. Let's go back to meiosis. Meiosis is, on the other hand, known as reductional division because the chromosome number is reduced to half. If in the parent cell it was 40, it will be reduced to 20 in the daughter cells. But meiosis occurs in two stages: meiosis 1 and meiosis 2. Yes or no? And you have something called as crossing over as well in meiosis. Yaad aa raha hai? Yes. And the same prophase, metaphase, anaphase, telophase. Karyokinase is followed by cytokinase. And at the end, you will land up into 4 daughter cells, but the chromosome number will be reduced to half. Yes or no? This is the basic of your gametogenesis. Because gametogenesis always yields a haploid gamete. Gametes are always and always haploid. While the germ cells, which initiates the spermatogenesis or oogenesis, are always diploid. Because we don't have diploid or aneuploid in our case. Yes or no? अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2n दिख रहा है, यहाँ पर देखो n है, आया ना? 2n indicates diploid cells or diploid set of chromosomes. What do you mean by that? Diploid set. 2 cells. Human में total कितने chromosomes होते हैं? हाँ? 20 pairs. तो से 20 pairs. बता दिया. किसने बताया? 23 pairs. ऐसी बोलते हैं. It is 22 pairs XX or XY. Because you have two types of chromosomes. One is allosome, one is autosomes, and one is sex chromosome. समझ आया? आपको तो सबको जो sexual dimorphism पढ़ाया मैंने आपको सबको पानी में मिला. Whenever someone asks, in भाई chromosome कितने होते हैं? You have to define as 22 pairs
XX और XY। क्या आप 23 पेयर्स बोलोगे तो सारे फिर हर्माफ्रोडाइट हो जाएंगे। क्लॉय का तो है नहीं किसी का। एनीवे, spermatogenesis is formation of spermatozoa or sperm, okay, from the germinal epithelium of testis. Important terminology पूरे definition में formation of spermatozoa किससे? From germinal epithelium। कहाँ? What? Formation of spermatozoa from in is it? अच्छा, इसको और थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं। Spermatogenesis is formation of haploid spermatozoa from the germinal epithelium in the testis. Easy? या तो फिर spermatozoa के आगे आप ब्रैकेट में n लिखो, ये आदत डाल लो, ये कहीं पर भी spermatozoa आया n लिखने का ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि समझ में आए कि भाई वो हैप्लॉइड है। चल, देयर आर सर्टेन स्टेजेस, आपकी टेक्स्ट बुक में 3 स्टेज दिया है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, बट आइडियली इट इज प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 4 स्टेजेस होते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में 3 ही दिए। द फर्स्ट स्टेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज। अभी मल्टीप्लिकेशन, एवरीथिंग गोज बाय द नेम। मल्टीप्लिकेशन मींस मल्टीप्लाई करेगा, जर्माइन मल्टीप्लाई करने के लिए what type of cell division you will need? The chromosome number should remain the same, easy? So multiplication, the primordial मतलब प्राइमरी से भी पहले, समझ में आया? The primordial germ cells, that is, इधर देखो, इधर 2n मतलब diploid, that is the germinal epithelium. Primordial germ cells is nothing but the germinal epithelium of the seminiferous tubule. याद करो वो लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो seminiferous tubule के जो germinal epithelium थे, those undergo repeated mitotic division. Mitotic, उसमें ही नाम में ही 2 ही देगा, 2 देगा ना सिर्फ, to produce large number of spermatogonium. Everyone एक ब्लैंक पेज निकालो टेक्स्ट बुक का या कहीं पे भी आपको जहां लिखना है, यू हैव जस्ट हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, एक के नीचे एक लिखना रहेगा। लास्ट पेज निकालना है, लास्ट पेज निकालना है, ताकि आपको बाद में समझ में, नोट्स में लिखना है, नोट्स में फास्ट। सो द फर्स्ट थिंग वाज द जर्मिनल एपिथेलियम, which is also called as primordial germ cells. Down arrow, माइटोसिस, एरो पे लिखा जाएगा माइटोसिस और नीचे लिखा जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, दिस समझ में आया? अब मैं ये एक बता दी हूं, बाकी आगे आपको लिखते जाना। ना मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ? द जर्मिनल एपिथेलियम, दैट इज द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, undergoes mitosis, repeated mitosis to form very large number of spermatogonium. समझ में आ गया? Easy? Now comes the second phase, it is the growth phase. नाम में दिया है growth phase. Growth होगा तो multiply होगा क्या? हाँ? नहीं, growth होगा तो size बढ़ेगी. So this spermatogonium increases in size, remains stationary, वही रुके हुए होते हैं, डिवाइड नहीं करते, लेकिन अपनी साइज में साइज बढ़ती है उनकी। तो दिस कम्स अंडर ग्रोथ फेज। और उनकी जब साइज बड़ी हो जाती है तो दे लैंड अप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। दिख रहा है? समझा? तो स्पर्मेटोगोनियम, डाउन एरो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एरो पे आएगा ग्रोथ फेज। तुम लोग नोट्स बनाने के वो नहीं हो क्या? नोट्स बनाने नहीं आती ना? नहीं आते, आई कैन सी सबके फेस पे। ये देखो, इसका चल रहा है एक सिंपल फ्लो चार्ट। डन?
Now the third phase, that is the maturation phase. Ideally maturation phase बहुत लंबा चलता है और इन लोगों ने सब कुछ एक ही इसमें दे दिया. अब गौर से सुनो. Everyone pens down. ग्रोथ फेज हो गया. पहले डिवाइड किया, माइटोसिस किया, फिर साइज बढ़ा. अब जब सफिशिएंट साइज हो गया कि भाई ठीक है, नाउ द साइज बिग इनफ, it will undergo meiosis. It will undergo meiosis. The primary spermatocyte on the board, the primary spermatocyte undergoes meiosis 1 and forms secondary spermatocyte. This secondary spermatocyte undergoes meiosis 2 and forms spermatids. And forms spermatids. These spermatids are non-motile. Now comes the fourth stage, transformation. The spermatids cannot move because they don't have flagella. So in the last phase, flagella, that is the tail along with the middle piece, and few changes in the head is brought, because of which your spermatid is converted into spermatozoa, which is now viable, motile, have a tail, head, neck, middle piece. समझ में आया? इजी हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस. आई विल रिपीट इट अगेन और उसके बाद आप फ्लो चार्ट खुद से बनाओ. फर्स्ट थिंग, what is spermatogenesis? Spermatogenesis is formation of haploid spermatozoa from the germinal epithelium, that is 2N, of the seminiferous tubule in the testis. Yes or no? Spermatogenesis involves stages. The first stage is multiplication phase or multiplication stage, whereby the germinal epithelium undergoes repeated mitotic division. Repeated mitotic division results in large number of spermatogonia, which are still diploid because mitotic division. The second phase, that is the growth phase, whereby this spermatogonia increases in size. Good enough growth occurs in this spermatogonium, and now they are labeled as primary. It undergoes meiosis. It undergoes meiosis 1 and forms secondary spermatocyte, followed by meiosis 2 and forms spermatids. Spermatids are non-motile because they don't have flagella. They are not yet fully developed spermatozoa. So a phase called as transformation phase occurs, whereby flagella is added to the spermatids. Some changes occur in the head, and later on a haploid spermatozoa, which is motile, is produced at the end of the story. Samjha? Any doubts? फिर से the germinal, up मैं थोड़ा short में. The germinal epithelium undergoes mitotic division and forms spermatogonia. Spermatogonia increases in size and forms primary spermatocyte. Primary spermatocyte undergoes meiosis 1 and forms secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte undergoes meiosis 2 and forms spermatids. Spermatids undergoes transformation and forms spermatozoa. Spermatozoa is haploid since it has come through meiosis. Yes or no? Yes. अब फ्लो चार्ट बनाओ खुद से. और जो एरोज होते हैं ना बेटा, यू आर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. बहुत जल्दी आ गए दूसरे लेक्चर के लिए. अभी 1 घंटे बाद दूसरा लेक्चर. क्या हुआ बेटा, नहीं आ रहा ना? So the first term will be the germinal epithelium, down arrow, mitosis, which will yield spermatogonia. Spermatogonia down arrow growth phase will yield primary spermatocyte. Down arrow meiosis 1 will yield secondary spermatocyte.
Down arrow meiosis II will lead to spermatids. Down arrow transformation will lead to spermatosis. Easy? आप लोग अभी तक बच्चे ही हो. सिर्फ नाम के लिए प्यूबर्टी हिट. सब लोग अभी लिख रहे हैं ना, है ना? Done? Any doubts? Easy? A short question from gametogenesis. आने ही वाला है HSC में, by hook or by crook. 1 मार्क्स के लिए तो 1 मार्क्स के लिए आएगा ही, आई एम श्योर. ठीक है? Any doubts, anyone? Now, ये जो phase है, when the spermatid is getting transformed, pens down everyone. When the spermatid is getting transformed into a motile spermatozoa, this procedure is called as spermiogenesis according to your textbook and spermiation according to my textbook. Anyways, अब इसमें होता क्या है, स्पर्मेटिड को देखो यहाँ पर और स्पर्मेटोजोआ को देखो, चेंजेस बताओ क्या क्या है. फ्लैजेला आ गया. सेकेंड थिंग, हेड पोर्शन छोटा हो गया है ना. यस. कंडेंसेशन और नेक पोर्शन दिख रहा है कहीं? कहाँ दिख रहा है? ओके, दिस पार्ट इज द नेक पोर्शन. हेड के इमीडिएटली नीचे नेक होता है. Length of the spermatid increases. Length increases, size decreases. Otherwise, centrioles are here. We'll come to this. Mitochondria becomes spirally coiled and acrosome is formed from the Golgi apparatus. Anyways, आप जब spermatozoa का structure पढ़ोगे ना, what you will find is कि उसके head में एक special structure होता है जिसका नाम होता है acrosome. तो एक नया structure आ गया, acrosome. Mitochondria becomes spirally coiled. 10 to 12 mitochondria spirally coiled होते हैं along the axial filament. I'll come to the structure later on. मतलब नए नए structures आ रहे हैं. Moral of the story. एक normal cell था, उसको head लगा दिया, उसमें head आ गया, neck आ गया, middle piece आ गया, size कम हो गया. समझा? Yes, this is a structure of a normal spermatozoa. You can see a head, neck, and the entire body. See, everyone on the board. Believe that. Anyways, on the board, everyone. Can you see the head? Middle piece,
no? And tail? देखो एक बात मैं आपको बोलूं, इसमें सिर्फ तीन ही चीज है, नेक दिया नहीं है, और बॉडी का दो पार्ट होता है, एक होता है मिडिल पीस और एक होता है टेल। उसको सीधा तीन ही पार्ट में डिफाइन कर दिया है। आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कौन सा पेज है बेटा? पेज नंबर 29। यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स दिए, फर्स्ट इज हेड, neck, middle piece and tail. आया ना? Yes. Clear? Now let's concentrate on head. Anyways, head. Head contains haploid nucleus. ये दिख रहा है? This is a nucleus. उसके ऊपर दिख रहा है आपको? हेड के ऊपर, हेड का एकदम टिप पर. This is nothing but acrosome. Acrosome is a specialized body which is derived from Golgi apparatus. ये acrosome के अंदर कुछ special enzymes होते हैं. First is zonal lysine enzyme, second is proteolytic enzyme, and third is hyaluronidase. Third is hyaluronidase. So say hyaluronidase. क्या सुना था? Hyaluronic acid या hyaluronidase. क्या सुना था? क्या सुना था? गर्ल्स कहाँ पढ़ा है? जोर से, जोर से. क्या 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 फिर से बोलो. स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है hyaluronic acid. So what should I consider from this point? बेटा hysterical. What do you mean by term hysterical? हमने देखा था ना एक केस बहुत पहले आपको बताया था टाटा कंपनी. That means hysterical. Attention seeking. Okay. क्योंकि because they have hyster, that is humans. Uterus का Greek में term is hyster. Anyways, अच्छा जिसको हिस्टेरा होता है ना, मतलब जिसके पास यूटेरस होता है उनके पास कैरिंग एंगल होता है. थोड़ा डीप. यूटेरस, the perimetrium is outer layer. The vigorous contraction of perimetrium नहीं है, myometrium. Myometrium contracts during delivery of the baby. Myometrium contracts during passage of the menstrual blood. इसीलिए females get cramps before menstrual bleed because the myometrium is contracted somewhat. ठीक है? Endometrium, again the most important part. Endometrium is nothing but an epithelium only. It sheds off, yes or no, during menstrual bleed. It shows cyclical changes under the influence of hormones, yes or no? Yes. सो रहे हो सब लोग? Endometrium is the innermost layer. हाँ या ना? Yes. याद आ गया? Endometrium is richly supplied by blood vessels which provides nourishment to the developing fetus. ये तो बात की बात. It provides site for implantation. Please ये endometrium का function भूलना नहीं, क्योंकि आगे पूरा menstrual cycle है. पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे का ऑलमोस्ट, जो इस पर बेस्ड. Endometrium. The endometrium provides site for implantation. Endometrium sheds off during menstrual bleed. Endometrium shows cyclical changes during menstrual cycle. Okay. Now
अगर if you see the uterus ना, it is divided into three parts: the fundus, the body, and the cervix. Fundus, door से fundus, body, cervix. Now what is fundus? Fundus is कहीं पर भी if you use the term fundus ना, fundus in general means dome shape. ये पार्ट दिख रहा है आपको? आया ना? The part above the entry of the fallopian tube. दिखा? The dome shaped part above the opening of fallopian tube is called as fundus. Easy? The rest entire part is called as body. While the lower part, this part, ये दिख रहा है ये part? आया ना? The lower part of the uterus, which opens up into the vagina, is called as cervix. नहीं समझा? इसको नहीं समझा रेजर हैंड? इसको समझा रेजर हैंड? समझा? This part, this dome-shaped part, which is present above the opening of the fallopian tube, is called as fundus, while the entire rest part is called as body. This lower part, which opens up into vagina, is called as cervix. Now, if you see cervix, यहाँ पर देखो एक opening नजर आएगी, एक दूसरी opening नजर आएगी, हाँ या ना? Yes. अंदर की जो opening है, this opening is called as internal os. क्या बोलते हैं? Internal os. Os मतलब opening, okay? बाहर वाला जो opening है, उसे हम कहते हैं external os. क्या कहते हैं? External os. This is internal os. This is external os. और ये बीच में जो कैनाल है, उसे हम कहते हैं cervical canal और cervix proper. You will not believe जब pregnancy होती है ना, तो ये cervix is internally lined by mucus membrane. It secretes thick mucus. So some people may come up with premenstrual leukorrhea. Boys may not be aware of this part. Anyways, we'll come to this later on. Pregnancy के टाइम पे ना, ये cervix इतना thick mucus secrete करता है, ये plug बन जाता है. प्लग, ईयर प्लग्स देखा है? वो प्लग इसको बंद कर देता है. समझ रहे हैं या नहीं? Moral of the story is cervix is lined by mucous membrane. Cervix is lined by mucous membrane. The thickness, viscosity, quantity of the mucus varies from time to time. Okay? Any doubt? Cervix is later on, अभी ये जो cervix इतना thick दिख रहा है ना, during delivery effacement हो जाता है इसका, ये गायब हो जाता है. कैसे गायब होता है? ये पतला हो जाता है, ताकि बेबी इजी पैसेज हो जाए नीचे. समझा? हाँ या ना? इजी? cervix ये है. So your uterus is divided into three parts: the fundus, upper dome-shaped part present above the opening of the fallopian tube is fundus. The entire part is called as body, while the lower part, which opens up into vagina, is called as cervix. Cervix, the three parts of cervix includes the internal os. Internal os की वजह से cervix uterus में open हो रहा है. External os की वजह से cervix vagina में open. Yes or no? The three parts are internal os, external os, and the intermediate cervical canal और cervix proper. Cervical canal हम नहीं बोलते हैं, आपके टेक्स्ट में दिया है, but this is actually your cervix proper or cervix. समझ में आ गया? हाँ या ना? अब ये तो इंटरनली हो गया. जब एक्सटर्नली आप देखोगे यूटेरस को ना, तो जहां पर cervix है, ये दिख रहा है आपको? जहां पर cervix है, वो आपको ऐसे थोड़ा दबा हुआ दिखेगा, constricted दिखेगा. This part, which corresponds internally to the cervix, externally it is called as isthmus. ये अलग isthmus.
ये इस्टमस अलग है। इस आप इस्टमस 5 इस्टमस पूरी बॉडी में आप तो कभी भी इस्टमस पढ़ो तो उसके नाम के आगे लिख लेने का इस्टमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अभी यहाँ पर आप पढ़ रहे हो इस्टमस ऑफ द यूटेरस। बाकी फंडस भी आपने स्टमक में पढ़ा था। इस्टमस आपने डियोडेनम में पढ़ा था, स्टमक में पढ़ा था। अभी एंडोक्राइन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ोगे। तो इस्टमस सिंपली यहाँ पर इज एन कंस्ट्रिक्शन। Isthmus is nothing but the constriction which corresponds internally to cervix. समझा या नहीं? Any doubts? Easy. See, male reproductive system और female reproductive system तो अगर आप कंपेयर करोगे ना तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इजी और पूछा भी जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना कोई पूछता नहीं। ठीक है? एनी डाउट्स एनीवन? पक्का? Vagina, this lower canal which opens up externally into the vulva is called as vagina or vaginal tract. Now, this vagina is again has 3 layers. The inner layer is mucus layer, which does not secretes anything. The vaginal mucus, ये vaginal mucus ही एक ऐसा mucus है जो कुछ secrete नहीं करता, कभी कुछ secrete नहीं करेगा, लेकिन वो moist रहता है because of the secretions of the mucus gland present in the cervix. Cervix के जो mucus gland है, वो जो mucus secrete करते हैं, उसी से vagina wet रहता है, moist रहता है। समझा या नहीं? Second part, यहाँ का जो epithelium है, it is stratified. What do you mean by the term stratified? Pavement like. एक के ऊपर एक बहुत सारे layers. Yes or no? Complex. Another point is it is non-keratinized. It accommodates certain bacilli. जिसका नाम है Dorsal bacilli, which keeps the vaginal pH acidic. Another more important point, the mucosa of the vagina secretes, stores glycogen. दिया है? बॉडी में इतने सारे प्रॉपर्टीज किसी एक म्यूकस मेम्ब्रेन के पास आपको कहीं नहीं मिले, कभी नहीं मिले। क्या क्या है? इट इज स्ट्रैटिफाइड, नॉन केराटिनाइज्ड। मतलब नॉन केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन वो कहाँ गए डर्मेटोलॉजिस्ट? हाँ बेटा, केराटिन मतलब केराटिन इज अ केराटिन इज अ प्रोटीन। कहाँ रहता है? बालों में और नेल्स। क्या काम होता है? बस ऐसे ही करें, भूख लगी तो प्रोटीन की जरूरत पड़ी तो खा लेगा, है ना? ये सब यही फंडा होता है। फिर क्या होता है? क्या कर रहे हो बेटा? बेटा आप इधर आज लेक्चर के लिए आए हो? पक्का? मेरे को नहीं लग रहा। क्या करूं? खड़े रहो। अगर वो I'll ask after the topic is completed, I'll ask few questions to, क्या नाम है बेटा? Zen. I'll ask few questions to Zen. If he fails, all the boys will write that part 3 today itself before going home. Okay? ठीक है बेटा? No? At least 2 times तो लिखाऊंगा। कहाँ थे? केराटिनाइज जाने दो, है दिया कि नहीं दिया? नॉन केराटिनाइज
Okay. आप ही ढूंढ करके बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग है नॉन केराटिनाइज होना, वजाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम का नॉन केराटिनाइज्ड होना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। सेकेंड पार्ट, द म्यूकोसा के इमीडिएटली बाहर एक स्मॉल मसल लेयर होता है और उसके बाद बाहर एडवेंटिशियल लेयर दैट इज योर फाइब्रस लेयर होता है। म्यूकोसा वजाइना इज एन कैनाल बेसिक copulatory canal. So it is made up of 3 layers: internal mucosal layer, which is non-keratinized, which never secretes anything, stores glycogen, accommodates a bacilli called as Dordaline bacilli, which will keep the vaginal pH acidic. Okay. Mucosal layer के बाद में muscular layer आता है, and muscular layer के बाहर adventitial layer, that is the fibrous layer. Fibrous layer for protection again. क्यों? Because कल आपने देखा vagina is present between the ureter and the anal canal. यूरेटर आगे की तरफ है, एनल कैनल पीछे की तरफ है और बीच में वजाइना। तो उसकी इंटीग्रिटी के लिए यू हैव योर एडवेंटिशियल लेयर दैट इज अ फाइब्रस। समझ में आया? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन या कुछ गलतियों की वजह से एनस और वजाइना के बीच में एक फिस्चुला बन जाता है, जिसकी वजह से स्टूल एनस में भी आता है और स्टूल वजाइना से भी बाहर। तो इसके लिए वो एडवेंटिशियल लेयर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ गलत डिलीवरी हो गई या कुछ गलती हो गई फीमेल से तो पॉसिबल, ठीक है? या तो फिर यूरिन वजाइना से आए, फिस्चुला बन गया, बार बार इन्फेक्शन हुआ, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कोई गलत हो गया, एचएसजी गलत कर दिया, ऐसा होता है। रेयर कंडीशन बट इट इज पॉसिबल। ओके, अच्छा, इट इज vagina is a canal which allows passage of menstrual blood during menstrual bleed. क्या चल रहा है? menstrual bleed and delivery of the baby, ठीक है? ओके, now the internal genitalia समझा? now the external genitalia. I would prefer my phone. इसमें समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा टेस्ट है क्या? कौन सा टेस्ट है? Girls, this part is nothing but an external genitalia of the female. Few important points, few important structures which you will see easily are क्या ये लाइट बंद कर दे? सोना नहीं, सोना नहीं कोई। Anyways, can everyone see labia majus? This is nothing but labia majora. This is nothing but everyone feel your lips. Everyone feel your lips. Feel किया? Same structure. Similarly, same as it is. जिस तरह आपके lips है, उसी तरह labia majora होता है. Labia majora, majora because it is major, बड़ा.
It is lined by skin. It contains hair follicles. It contains sweat glands. अभी labia majora देखो. This labia majora, this entire part meets posteriorly. दिख रहा है? हाँ या ना? ये पूरा बाहर का जो एकदम external part है, that is nothing but labia majora only. This entire part. This fold is completely labia majora. This labia majora meets posteriorly to form foreshead. To form foreshead. जोर से foreshead. समझ में आ गया? लाबिया मेजोरा आगे भी मिल रहा है, पीछे भी मिल रहा है, बट जहां पीछे मिल रहा है, this part is called as foreshead. Labia majora is just like your lips. Fleshy होता है. It is rich in blood supply. It contains hair follicles, sweat glands, etc. Inner to this labia majora के immediately अंदर you will have labia minora. Similar structure but smaller in size. In an nulliparous female, this labia minora is very compact. Even labia majora is also compact. It cannot spread easily because it has never allowed the delivery of the baby. Okay? So labia minora, this internal fold which meets posteriorly to form posterior commission. Where this posterior commission is? Posterior commission. Labia minora means sorry. The labia majora meets posteriorly to form posterior commissure, while labia minora meets posteriorly to form foreshead. समझ में आया? Moral of the story is labia majora ऊपर भी मिल रहा है, labia majora नीचे भी मिल रहा है. Labia majora नीचे की तरफ मिल रहा है, तो उस part को हम कहते हैं posterior commissure. उसके अंदर है labia minora. It is devoid of sweat glands. It is devoid of hair follicles. It is not as fleshy as labia majora. It meets posteriorly to form foreshead. समझ में आ गया? Now internal to this, दो folds हो गए. इसके अंदर you will see two openings. One opening is called as urethral orifice or urethra को. यहाँ से urine आएगा. उसके नीचे you will see a comparatively bigger opening, which is vaginal orifice. जो vagina अभी पढ़ा आपने, वो यहाँ पर open होता है. Understand this thing. Labia minora के अंदर दो opening होती है. One is urethral opening ऊपर की तरफ, and it is smaller comparatively. नीचे की तरफ comparatively bigger opening, vaginal orifice or introitus. This vaginal opening or introitus is covered, incompletely covered by a membrane called as hymen. Called as vaginal orifice को के ऊपर ऐसा curtain type होता है, but it is not completely covered. Why? It is incompletely covered. क्यों? जोर से हाँ, अगर vaginal orifice बंद हो गया, every month females menstruate, तो menstrual blood कहाँ जाएगा? अंदर जमा हो जाएगा. Yes or no? इसीलिए वो थोड़ा ओपन है ताकि ब्लड फ्लो हो. समझा या नहीं? क्योंकि अगर ब्लड पेंट अप हो गया तो हेमाटोकॉल्पस, हेमाटोमेट्रा, हेमाटोसेल्पिंग्स, फिर पायोमेट्रा, इन्फेक्शन हो जाएंगे. बेसिक ब्लड वेरेबल जहां पर भी ब्लड होगा वहां पर एक्ट निडस फॉर बैक्टीरिया. यस और नो? यस. हाइमेन समझा? ओके. नाउ आप लोगों को फ्रेंडमिल labia minora meets anteriorly. Can everyone see this part? This is called as clitoris. Labia minora ऊपर जाकर के जब मिलता है तो immediately उसके ऊपर what is ये labia majora है बाहर का, उसके अंदर labia minora. तो labia minora ऊपर की तरफ जब मिलता है तो वहां पर एक erectile tissue होता है. Erectile tissue which is made up of corpus cavernosa. What is corpus cavernosa? Muscles in penis. Hi, Anna. Again, you know that penis is an erectile organ. Similarly,
clitoris is richly supplied in nerves. It is considered as homologous to male penis. Clitoris is considered as homologous to male penis. समझा? Labia majora is considered as homologous to male scrotum. Any doubts? समझा या नहीं? तो क्लिटोरिस समझा? Labia minora, देखो ये labia minora is meeting anteriorly और वहां पर it is accommodating the clitoris. Yes or no? Any doubts? अब इसके ऊपर you have a triangular area which is nothing but a pad of fat which is called as mons pubis or mons veneris. यहाँ पे mons pubis, this triangular part is called as mons pubis or mons veneris. Textbook में दिया. लाइट ऑन होगी तो तब समझ में आ गया? लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा, हाँ या ना? पोस्टीरियर कमिशर, fourchette, हाँ या ना? urethral opening, hymen, that is a vaginal, that is incomplete covering of the vaginal orifice, हाँ या ना? Then clitoris. इतना ही दिया. अच्छा, one important point which I want you guys to notice. 3 openings दिख रही आपको? The urethral opening, the vaginal opening, and the anus. Both are very close to each other. इसीलिए if the female lacks personal hygiene, if the female does not use water for cleaning during after going to the washroom, she may land up into repeated infections and leukorrhea because the urine droplets may enter vagina and cause pelvic inflammatory disease, vagina. The stool particles may enter into vagina and may cause infection. Or the menstrual blood from the vagina may soil up your urethra and cause urethritis, urinary tract infection. इसके लिए फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन बहुत कम है, जिसको आप लेमैन टर्म में कहते हो पेशाब में इंफेक्शन, यूरिन में इंफेक्शन. ओके, एनी डाउट्स एनीवन? देन लाइट्स ऑन. टेक्स्ट बुक देखो. आफ्टर द टेक्स्ट बुक आई शेयर वन केस विद यू. यही पर हाइजीन करेंगे. पेज नंबर 24, 25 बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटल दिख रहा है, कोई लिख करेगा प्लीज. मानस लिख करो बेटा. External genitalia. The external genitalia organs of female. Just a second, hold on. Can everyone see the isthmus? समझ में आया? isthmus. Isthmus is nothing but a constriction externally which corresponds internally to the cervix. समझा? हाँ, इधर. Everyone see the internal os? Os दिख, internal os किधर है? Internal os दिख रहा है? External os. इसके बीच में पूरा cervix. Okay? Any doubts, anyone? The external genitalia organs of female include parts external to the vagina and are collectively called vulva or duodenum. Duodenum. They include the following parts: vestibule, a median vertical depression of vulva enclosing the urethral and vaginal opening. Labia minora. These are bare of thin folds inner to the labia majora with which they merge posteriorly to form the. Hold on. External genitalia. The external genitalia of organs of the female include parts external to the vagina and are collectively called as vulva. vulva or pudenda. सब एक ही टर्म.
They include first of all the vestibule, जो दो ओपनिंग इंक्लूड कर रहा था, लाबिया मेजोरा था, उसके अंदर लाबिया माइनोरा, लाबिया माइनोरा के अंदर जितना भी स्पेस है, it is present at the anterior chest wall at the level of second to sixth ribs. यानी तो था स्ट्रक्चर, हमने देखा था ना. डेवलप कब हुआ? आफ्टर. प्रेजेंट कब था? फ्रॉम बर्थ. किसमें प्रेजेंट था? मेल्स एंड फीमेल्स. अच्छा, कभी कभी फीमेल मेल्स में एनलार्जमेंट हो जाता है मेमोरी ग्लैंड. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डेलेक्टो. I'm not getting it right. Gynecomastia. Sorry. That condition is called as gyneco. Gyneco मतलब female. Mastia मतलब mammary gland. Female जैसा mammary gland in male is called as gynecomastia. The only treatment is weight loss and surgery. Otherwise, in initial days, before puberty अगर gynecomastia है, it is normal. After puberty अगर gynecomastia है, gynecomastia का भी destination है. At the time of puberty है, you can give testosterone, the size will reduce. लेकिन अगर after puberty gynecomastia है, you need weight loss and surgery, and that too by plastic surgery. Anyways, एक बार कोई read करो please. जोर से. Present in the subcutaneous tissue of the cranial, thorax, and the pectoral region. Pectoral region. Pectoral girdle कहाँ है? हाँ या ना? Anterior chest. Anterior chest wall पे present. It is subcutaneous. Immediately skin के नीचे, because it is a modified sweat gland. It is present at a level of 2 to 6 vertebrae. 2 to 6 ribs. Sorry. Next, it is a modified sweat gland. It contains. Acha. If you will see the entire makeup of the mammary gland, it is divided into two components: the fatty tissues and the glandular tissues. ये yellow दिख रहा है आपको? These are nothing but fats. और ये red दिख रहा है? These are glandular tissues. These are actually going to secrete milk. Fats are only and only for support. Fats are only for while your glandular structure are going to secrete milk. See, if you will see the story of the mammary gland, it is present right from birth, develops at the time of puberty. The development is ramp. The development is very fast and more during pregnancy. Becomes active only after pregnancy for 2 years. Thereafter, it is just present during. समझ में आया? The only function of mammary gland is to feed the newborn. It is present right from birth, develops at the time of puberty, becomes active after, during and after pregnancy. ऐसा milk secretion कब होता है? Only after pregnancy, not before that, not after that. समझा? Anyways, it contains fatty connective tissue and numerous lactiferous ducts. Lactiferous ducts are nothing but the glandular part. Glandular part why? Because they are going to secrete milk. Glandular tissue is divided into 15 to 20 mammary lobes, each with alveolar gland and lactiferous duct. ये दिख रहा है आप लोगों को? These are lobules, mammary lobules. अभी इसके अंदर आप लोगों को ना
ऐसे स्ट्रक्चर समझ में आएंगे. I don't know if you guys can appreciate this or not. These are nothing but alveoli. These alveoli are going to secrete milk. ये alveoli milk बनाने वाले. फिर ये मिल्क बाहर आता है. Can everyone see this? ये दिख रहा है, ये पार्ट पतला से पार्ट है एकदम. हाँ या ना? These are nothing but lactiferous duct. अब lactiferous duct के अलावा lactiferous sinuses भी होते हैं. I don't know whether it is here or not. ये पार्ट जहां पर मिल्क टेम्पररी स्टोर होता है. फिर लैक्टिफरस डक्ट आते हैं. फिर लैक्टिफरस डक्ट एरियोला में ओपन होते हैं निपल्स पर, और फिर वो बाहर मिल जाते हैं. समझा या नहीं? फिर से देखो. Glandular tissue is divided into 15 to 20 mammary lobes, each with alveolar gland and lactiferous duct. Each with alveolar gland and lactiferous duct. कितने हैं? 15 to 20. It is present in cogwheel appearance. Cogwheel appearance मतलब wheel देखा आपने? सब एक जगह कन्वर्ज होते हैं. उसी तरह ये एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं नहीं? हाँ या ना? Yes. Alveolar gland secretes milk. These are the alveoli which are going to secrete milk. Alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. This is how it goes. कैसे? पहले तो आपका alveoli है, सारे alveolus है, just converging into lactiferous duct. हाँ या ना? Read this 3 points, this 2 points. Alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. Tubules converge towards nipple located near the tip of the breast. समझ में आया? हाँ या ना? इजी है या नहीं? इधर इन लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज किया है. लेबलिंग में it is never mammary tubule and it is never mammary duct. It is lactiferous tubule and lactiferous duct. Need anyone? Stand up everyone. Right hand ऊपर. Head up. सुपरमैन बनना बेटा. Hand down. दोनों हाथ ऊपर. दोनों हाथ नीचे. Stand up. Sit. Stand. Sit. Sit. चल. Tubules converge towards the nipple located near the tip of the breast. External influencing breast. This is my domain. External influencing breast. It is pendulous. It is not globular. Can you see this thing? It is pendulous. It becomes more pendulous as the female ages. समझ में आया नहीं? It is held. ये जो है ना, यहाँ पर बीच में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो ब्रेस्ट को होल्ड करके रखते हैं मसल्स. ये आपकी मसल है, पेक्टोरालिस मेजर. चिकन जो लोग खाते हैं, बोनलेस जो खाते हो आप लोग, that boneless is nothing but pectoralis major muscle. तो ये मसल के इमीडिएटली ऊपर, स्किन के इमीडिएटली नीचे एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, which is made up of two components, the fatty part and the glandular part. The glandular part includes alveoli and the lactiferous duct, lactiferous sinuses. Alveoli are going to secrete milk. They are going to store the milk. The lactiferous sinuses are going to store the milk, and then they will open up in the nipples directly. समझ में आया? ये कन्वर्ज होकर के एक साथ एक जगह ओपन हो रहे.
हाँ या ना? ये एक है ना? This is nothing but nipple only. समझा? Any doubts? पक्का? Now, externally, if you will see this part, it is externally lined by skin. But towards the central part, it has an hyperpigmented round area, which is called as areola. Which is called as areola. It is complete round. And in the center of the areola, you will have a small erectile tissue part, which is called as nipples, basically. Yes or no? These nipples are very sensitive to touch. They are again visually supplied by nerves. समझ में आया? हाँ या ना? अब ये एरियोला के आसपास जो है ना, यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं. क्या होते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ग्लैंड्स और बड़े हो जाते हैं, जिसको कॉल्ड एज मॉर्टोमेरिस ट्यूबरकल. एनीवेज, प्रेगनेंसी के टाइम पे एरियोला की साइज भी बढ़ जाती है. एरियोला डार्क भी हो जाता है. समझा? एनी डाउट्स एनीवन? मेमोरी ग्लैंड समझ गया? पक्का? मेमोरी ग्लैंड अगर किसने बहुत बुरी है, बदवाए बहुत बुरी है, पाप में खड़ा कर चुका है तो ये है, वरना यही है. I have never seen memory gland as a perfect person. एक बार रीड करो टेक्स्ट बुक से. एनीवन? रीड करो जोर से. Necessary organ of female reproductive system for production and release of milk after parturition. What is parturition? Delivery of the baby. Development of the milk is an upper and puberty under the influence of estrogen and Progesterone. lactotropic hormone. Lactotropic hormone LTH ये पुराना नाम था. अब we never use the term lactotropic hormone. We use the term prolactin. ठीक है? Prolactin will not be females में अगर prolactin कम है ना, usually जिनको babies ऑपरेशन से होते हैं, we call it as LSCS. क्या बोलते हैं? C very good. LSCS और C section या cesarean section. और नॉर्मल आप लोगों से सुनोगे कि सीजर हुआ. It is never Caesar. उसकी spelling is Sir William Kessler one. पता है आप लोगों को? हिस्ट्री पढ़ा है? He was born by giving a cut on the abdomen of his mother. तब से उसका नाम रख दिया है cesarean section. तो जो बेबीज जिनमें cesarean section होता है तो वो नॉर्मल तो होता नहीं, हम पुल करके निकाल रहे बेबी को, तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता नहीं फीमेल्स की बॉडी, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता नहीं. अगर प्रोलैक्टिन लेवल इट शुड बी अराउंड 35 नॉर्मल नैनोग्राम फीमेल्स की बात है. अगर नहीं हुआ तो मिल्क प्रोडक्शन होगा ही नहीं. और अगर ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को बचाना है तो ब्रेस्ट फीडिंग करना. ब्रेस्ट कैंसर which is one of the most rampant cancers in females. पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट सर्वाइकल कैंसर, कैंसर ऑफ सर्विक्स बड़ा, which is caused by human health and disease. Causes of cancer, subtopic virus, aquara, HPV, human papillomavirus. This is one of the most common cancers in people. The second most common cancer is breast cancer. और breast cancer से अगर बचना है तो the only way, natural way is to breastfeed the baby. Okay? Anyways, क्या करना है? हाँ, फीमेल्स में अगर प्रोलैक्टिन लेवल कम हुआ, नींद आ रही है? ब्रेकफास्ट करके नहीं आया? नहीं आया ब्रेकफास्ट करके? आपके चेहरे से दिख रहा है वो भी ब्रेकफास्ट करके नहीं आया. क्या करते हैं? आपने आपको पीछे बिठाया.
प्रोलैक्टिन लेवल अगर मेल्स में बढ़ गया ना, this will result in infertility. सीधा डायरेक्ट infertility. लेकिन फीमेल्स में अगर कम हो गया तो अगैलेक्टोरिया. Second most important thing, estrogen, progesterone and prolactin. ये तीन hormones are necessary for formation of breast, initiation of milk production and continuation of milk production. Fourth important hormone which helps in release of milk. Helps in release of milk is oxytocin. Milk release बेबी के सकिंग मैकेनिज्म से होता है. बेबी जितना सक करेगा उतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन रहेगा. समझ में आया या नहीं? आया ना? थोड़ा आउट ऑफ द स्टोरी जा रहा है. चल अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक. इससे पहले बेटा हमने बहुत सारा पार्ट. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज. One of the most important topic in terms of HSC exam. जिस तरह हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, टेस्टिस को कट करके देखा था ना, हाँ या ना? इस तरह हम ओवरीज को कट करके देखते हैं. पहले फॉर 25 more minutes. आज टाइम नहीं जा. जैसा ना? है ना? Anyways, histological structure of ovary. I'll share you one story. I don't have much of a story. Personal hygiene. Why personal hygiene is important in case of females? You saw 3 openings. A female came up to me, I guess 1 or 1.5 months back. She complained of burning micturition. Urine pass करने के टाइम जलन होती है. क्या हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? जलजल. हाँ, whatever. And उसका सिर्फ she had a history of kidney failure if I remember. Had a history of acute kidney failure. और अब उसको यूरिन में इन्फेक्शन होने का सिम्टम हो दे, तो हमने ना सीधा किया कि आप एक यूरिन रूटीन कराओ, यूरिन का चेकअप कराओ, फिर हम कुछ स्टार्ट कर सकते. मतलब वी कैन नॉट गिव डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स. उनका किडनी जा चुका है एक बार, उनको जैसे एडमिट किया था वगैरह वगैरह, किडनी के इश्यूज है. तो उन्होंने यूरिन सैंपल दिया. जब रिपोर्ट्स आए ना, तो यूरिन में 200 to 300 आरबीसीज दिखे, रेड ब्लड सेल्स. 200 to 300 हाई पावर फील्ड एचपीएफ. This was one of my deadliest case of UTI. See, मैंने हिस्ट्री पूरा स्टार्ट किया. स्टार्टेड विद हिस्ट्री. कब से स्टार्ट हुआ, क्या होता है, फीवर आता है नहीं आता है. एंड शी डिडंट कंप्लेन ऑफ फीवर. इतना सीरियस इन्फेक्शन है लेकिन फीवर है ही नहीं. I kept on asking. Almost after 15 minutes of history taking, she said she is on the bleeding phase of menstrual cycle because of his blood. समझा या नहीं? Menstrual bleeding में blood पास होता है, तो उसने एरिया क्लीन करके ब्लड यूरिन नहीं दिया, जिसकी वजह से वही menstrual blood यूरिन में आया और 200 RBC. Moral of the story is menstrual blood can go up to the ureters and cause urinary tract. समझ में आया? इसी तरह ल्यूकोरिया, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में सफेद पानी, बॉयज विल बी नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट.
just like a menstrual blood flow, females also complain of a sticky fish कैसे smell करती है fish वैसा स्टिंग करने वाला वैसे स्मेल वाला फ्लूइड पास होता है पर वजाइन ड्यू टू lack of personnel. Leukorrhea first and foremost cause lack of personnel. जिनको leukorrhea है 110% I'm sure she is negligent or very lenient with respect to her personnel. Any doubts? पक्का? Histological structure of ovaries. Ovaries are gonads in females. Ovary secretes dash and dash. Huh? Sex hormone that is estrogen. Estrone is also estrogen के तीन अलग-अलग varieties है. Estriol, estradiol and esterone. Triol हमने ऐसे याद रखा है triol during pregnancy, diol during copulation and esterone during menstrual. Anyways, estrogen, progesterone, relaxin, inhibin, active और ये सारे बनते हैं प्रोजेस्टेरॉन से. प्रोजेस्टेरॉन बनता है कोलेस्टेरॉल because all the sex hormones are steroidal hormones. All the sex hormones are steroidal. समझ में आया? इसीलिए जब जिम में जाने के बाद जो लोग स्टीरॉइड इंजेक्शन लेते हैं वो इस साइकिल में इश्यूज लेकर के आते हैं. ओके, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आपने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ डिजीज में न्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर. एनीवेज, so it is divided into two parts, outer cortex and inner medulla. ये बाहर वाला part is called as cortex और inner part is called as medulla. Let's talk something about medulla. बीच में you will only see stromal fatty connective tissue. क्या दिखेगा? Stromal fatty connective tissue. स्ट्रोमा इसीलिए कहते हैं हम उसको. इनर कॉर्टेक्स में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ब्लड वेसल्स दिखेगा, लिम्फेटिक्स दिखेगा. पेज नंबर 23 पे आ जाओ. मेडुला दिख रहा है? बीच में से रूट्स लाइक कुछ दिख रहे दिखेगा. बीच में एकदम सेंट्रल पार्ट, बीच का पार्ट. दिस पार्ट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स, सॉरी, लिम्फेटिक्स, आर्टरीज, वेन्स एटसेट्रा, और कुछ भी नहीं. इनर कॉर्टेक्स में, इनर मेडुला में you have stromal fatty connective tissue which involves, it also includes your blood vessels, lymphatic drainage, etc. और कुछ भी नहीं है. बाहर की तरफ देखोगे, that is outer cortex की तरफ, outer cortex की तरफ देखोगे तो outer cortex you will see कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो you will see follicles at different stages of development. जैसे कि आप देखो प्राइमरी फॉलिकल, मैच्योर्ड फॉलिकल, रप्चर्ड फॉलिकल और फिर बचा कुचा वाला पार्ट, कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह. That means the cortex, अच्छा आगे दिया है कैसे? The cortex will show follicles at different stages of development. अगर पूरी ओवरी को तीन लाइन में मुझे एक्सप्लेन करना है तो I will explain it as the ovary is divided internally into two components, the outer cortex and inner medulla. The medulla shows nothing but the stromal fatty connective tissue including the blood vessel, lymph vessels and nerve fibers. While outer cortex will show follicles at different stages of development. That's it. ये पूरा आपने internal structure of ovary describe कर दिया. अब if you want more details, you will see कि जिस तरह आपका seminiferous tubule was lined by germinal epithelium, हाँ या ना? Yes.
इंटरनली इट वाज लाइन बाय जर्माइनल एक्विथिनम ना, और वही जर्माइनल एक्विथिनम आगे जाकर के क्या बनते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो यहाँ पर भी सिनेरियो सेम है, द कॉर्टेक्स इज लाइन्ड बाय अ लेयर ऑफ जर्माइनल एक्विथिनम, आउटर मतलब सबसे बाहर वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स का, इट इज लाइन्ड बाय जर्माइनल जोर से, द आउटर कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट, granular and shows large number of जोर से Ovarian follicles. और जोर से Ovarian follicles. cortex shows presence of Ovarian Ovarian follicles. और जोर से Ovarian follicles. समझ में आ गया? Yes. थर्ड पॉइंट रीड करो एक बार। फिर से रीड फिर से रीड करो। क्या और माइग्रेट Sense of dorsal. जब एक बार हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी, यस और नो, लेकिन फीमेल्स का जो oogenesis है वो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं, बिफोर डिलीवरी उनके बर्थ से पहले ही oogenesis स्टार्ट हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये तीन जो मंथ होते हैं ना प्रेगनेंसी, अभी बेबी डिलीवर भी नहीं हुई है, अभी वो बेबी अपने मदर की वोम में ही है, वो वोम में ही उसके ओवरीज, अभी ओवरीज जो बनते हैं ना, ओवरीज बोलो या सारे जेनिटल ऑर्गन्स बोलो, दे डेवलप्ड बाय अ कॉमन पार्ट कॉल्ड एज जेनिटल रिज। फीमेल्स में होता है वो म्यूलेरियन डक्ट, मेल्स में होता है वो वॉल्फियन डक्ट। अगर सपोज अगर आपने बहुत बड़े एम्ब्रियोनिक रेडियो डायग्नोसिस किया आपने, तो आप जब यूएसजी करोगे ना, आपने अगर बेबी, अभी प्रेग्नेंट लेडी आई है, उसको 3 महीने हुए प्रेगनेंसी, 4th मंथ चल रहा है, आपने सोनोग्राफी किया और आपको म्यूलेरियन डक्ट दिखाना, तो वो 100% श्योर है कि मेल चाइल्ड रहने वाला। अगर वॉल्फियन डक्ट दिखाना तो वो फीमेल चाइल्ड रहे, ठीक है। अब ये आगे जाकर के गोनाडल रिज, रिज मतलब एक छोटा सी ब्रिज जैसा समझो या एक छोटा सी पार्ट समझो, इससे गोनाड्स डेवलप होते हैं। एक सेल होता है जो पहले पहले ग्रुप बनता है और फिर उससे वो स्प्लिट होकर के 2 ओवरीज और 2 टेस्टिस बनते, ये दोनों में कॉमन है, गोनाडल रिज दोनों में कॉमन, इसीलिए टेस्टिस का जो पेन है वो एब्डोमेन में फील होता है, लोअर एब्डोमेन, क्योंकि वो बना ही उधर है, उधर के सेल से बना है, ठीक है। तो अभी एम्ब्रियोनिक में 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जो एंडोडर्म है ना, कहां गया, अच्छा डॉर्सल एंडोडर्म, तो एंडोडर्म माइग्रेट होकर के आपका, अब हम बात कर रहे हैं म्यूलेरियन डक्ट की, वॉल्फियन डक्ट हटा लो, यहाँ पर कोई सीन नहीं, म्यूलेरियन सॉरी वॉल्फियन। इसीलिए पता है मेल्स को कभी कभी भेड़िया बुलाया जाता है, यू नो व्हाई, यस, लेकिन आज अगर आप यहाँ नहीं, बाहर किसी मेल को वोल्फ बुलाओगे नहीं, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ बैड वर्ड, और अलग स्टोरी, एनीवेज। तो मेल्स में वॉल्फियन डक्ट पूरा एक सेल, एक डक्ट से पूरा पेनिस स्क्रोटम पूरा बना, वहीं पर यहाँ पर फीमेल्स में म्यूलेरियन डक्ट से बना, किससे बना, म्यूलेरियन डक्ट। म्यूलेरियन डक्ट का एक पार्ट आता है गोनाडल रिज, गोनाडल रिज से आपके गोनाड, अभी ओवरीज 100% बनी भी नहीं, ओवरीज का भी प्रीकर्सर है, वहीं पर स्टार्ट हो गया है oogenesis,
उसके सेल्स डिवाइड होकर के गोनाडल रिज के सेल्स डिवाइड होकर के माइटोटिकली oogonia बना करके रख दिए। समझा? हाँ या ना? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एक सेगमेंट में करना आपको समझा। तो oogonia आपकी डिलीवरी से पहले बना, ओवरीज एक फ्रैंक स्ट्रक्चर में है उससे भी पहले बना, लेकिन वो ओवरी के स्ट्रक्चर से ही बना, लेकिन प्रॉपर ओवरी बना नहीं था अभी, ओवरी का प्रीकर्सर था, गोनाडल रिज था, उसके सेल्स माइग्रेट होकर के oogonia बना। समझ में आया? आया ना? अब रीड कर। अब समझा? As they grow, they are surrounded by layer of granulosa. अच्छा, अब ये structures of follicle का structure पढ़ाया गया है कि they are covered by granulosa cells। आज आप structure में पढ़ो। अभी follicles अलग अलग follicles है, primordial follicle, फिर primary follicle, फिर secondary follicle, फिर mature Graafian follicle, फिर वो Graafian follicle rupture होता है, बाहर ovum रिलीज करता है। तो ओवम तो रिलीज हो गया, जिसको आप बोल रहे थे एग एग एग, वो ओवम है। ओवरव्यू में अगर आपको मैं बात करूं तो ये फॉलिकल्स आर एक्चुअली, आपने एग देखा है ना, एग के अंदर योक होता है, हाँ या ना, और एग वाइट होता है। आपको अगर बाहर योक निकालना है तो एग को ब्रेक करना पड़ेगा तो योक निकलेगा। सिमिलरली फीमेल्स में फॉलिकल्स होते हैं, वो oogonia देखा आपने, वो oogonia एक्चुअल में आपका ओवम, तो उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो उसके ऊपर लेयर्स आते हैं। आप आगे स्ट्रक्चर ग्रेनुलोसा सेल का पेज नंबर 24 पे पढ़ोगे, देखो एक बार जाकर के सिर्फ देखो तो, बीच में oocyte दिखेगा आपको, उसके बाद कोरोना रेडियाटा सेल दिखेगा, दिख रहा है या नहीं? आया ना? फिर उसके बाद में ग्रेन्युलोसा सेल्स दिखेगा, फिर उसके बाद थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना दिखेगा। थीका इज टफ लेयर, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बाहर थीका एक्सटर्ना, फिर थीका इंटरना, फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स, फिर कोरोना रेडियाटा सेल्स, फिर उसके अंदर आपका oocyte। हाँ या ना? तो ये एक साथ लेयर नहीं है, स्टेप वाइज है। जैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल था तो सिर्फ ग्रेन्युलोसा सेल्स, फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स बढ़ गए, फिर कोरोना रेडियाटा सेल्स बढ़ गए। ठीक है, ये हम इसके डिटेल में जाएंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, हम इसे ऐसे ही समझ। Each primordial follicle has at its center a large primary oocyte which is surrounded by a single layer of flat follicular cells. Primordial follicle समझा? यहाँ पे दिया भी नहीं कि एक oocyte है, हाँ या ना? एक सोर्स है, क्या है? समझ में आ गया? Any doubts? Primordial follicle का oocyte is always diploid. Meiotic division gets arrested at meiosis 1। अच्छा, ये हम जाने दो, इसको हम डायरेक्टली आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसको सिर्फ एक टर्म में मैं समझाऊं तो ये है कि oogenesis स्टार्ट हुआ और डिलीवरी, जब बेबी का जब oogonia बनता है बिफोर डिलीवरी, it is somewhere, there are somewhere around 6 millions of oogonia in the ovaries of the female। कितने? लेकिन जैसे ही डिलीवरी होने वाली रहती है तो 3 लाख to 4 लाख रह जाते हैं, और वो अरेस्टेड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही बर्थ हुई वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला है क्या? नहीं, फिर वो अरेस्टेड रहते हैं प्यूबर्टी तक। कब तक? प्यूबर्टी में अराउंड 30,000 to 40,000 डेवलप होते, और वो 30,000 to 40,000 में से एक मैच्योर होता। बने थे लाख,
बने थे मिलियंस, रह गए लाख, डेवलप हुए थाउजेंड्स, निकला लेकिन एक, और वो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीड में वेस्ट हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हुई तो ही oogenesis कंप्लीट होता है। oogenesis इतना क्या कहते हैं अलग है ना, oogenesis स्टार्ट हुआ बिफोर डिलीवरी, और कंप्लीट कब होता है पता है? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, नहीं तो कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट में खत्म हो जाता। आप जब जब पढ़ोगे ना नेक्स्ट लेक्चर में हम oogenesis पढ़ेंगे, ये अगर आप लोगों को याद है तो oogenesis बहुत इंटरेस्टिंग, हाउ यू कैन रेगुलेट योर साइकिल्स वो भी समझ में आए। कुछ लोग मेडिसिन खाते हैं रेगुलेट करने के। एनीवेज विल कम टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब आप लोगों को शायद ये सारा समझ में आ जाए। ओवरव्यू में सिर्फ इतना दूं मैं कि फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स बने थे। अच्छा, पेज नंबर 23 में वो डायग्राम दिया फिगर 2.5, वो वाला पैराग्राफ, उसके बाद वाला पैराग्राफ और उसके बाद वाला पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ है जो आपको रीड करके आना है। ठीक है, उसमें दिया क्या, उसमें दिया है कि हार्डली फीमेल्स की पूरी लाइफ में कितने फॉलिकल्स यूटिलाइज होते और एक्चुअल में कितने फॉलिकल्स बेबी बनते, हार्डली 2, 2, 3, 4 बस बने थे। विल स्टडी दिस, आप रीड करके आओगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एनी डाउट्स एनीवन? स्टिल हैव 10 minutes. We'll study these structures later on. Let's go on to आंसर करो। ये हो गया ना? Name 3 parts of uterus. Anyone? Girls. कौन है? है आपके पास uterus? इनके पास है, उनसे पूछा। बोलो। Fundus, body and cervix. Parvoline gland in females is homologous to dash glands in males. Cowper's glands or pulbourethral gland. Lactotropic hormone, also called as prolactin.